Question number 5. This question is from equilibrium. A small ring P is threaded on a fixed smooth horizontal rod AB. This is rod AB and this is a ring P. Three horizontal forces of magnitudes 4.5 Newton, 7.5 Newton and F Newton act on P. These forces are acting on this ring P. Given that these three forces are in equilibrium, these forces are in equilibrium, find the values of F and theta. Now we will use here the concept of equilibrium. Sum of horizontal forces 0 and sum of vertical forces 0. This is an important condition for equilibrium. First of all, we will resolve these forces and find the rectangular components. Well, this is rod, this is rod AB, rod AB, this is a ring threaded, ring is P, or these are the forces acting on the ring. Force F, force F, sorry, 7.5 Newton. This is force 4.5 Newton. This angle is 20 degree. This angle is theta degree. This angle is 60 degree. Now we will resolve and find the components, rectangular components. First हम फोर्स F को रिजॉल्व करेंगे. ये component along horizontal component along AB and this is vertical component. These are two rectangular components. This angle will be 90 degree. So this component is F sin theta. थीटा का अपोजिट कंपोनेंट साइन में होता है F sin theta और other component is F cos theta. Similarly we resolve this 4.5 न्यूटन फोर्स, इसको रिजॉल्व करेंगे कि ये कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट ये है, एक along AB and a perpendicular to AB. This component is along AB or this component is along perpendicular to AB. So this angle is 90 degree. तो ये कंपोनेंट होगा 4.5 sin 20 degree. This component is 4.5 cos 20 degree. इसी तरह हम 7.5 न्यूटन वाली फोर्स को भी रिजॉल्व करेंगे. एक कंपोनेंट इसका ये है
दूसरा कंपोनेंट इसका ये होगा, दिस कंपोनेंट इज 7.5 sin 60 degree and this component is जो along AB है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7.5 cos 60 degree. This component is 7.5 cos 60, 7.5 sin 60 और ये दोनों इस 4.5 न्यूटन वाली फोर्स का कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो भी इसी लाइन ए बी पे है और 7.5 न्यूटन वाली का भी ये कंपोनेंट इसी लाइन पे है, ए बी पे। Now we are using equilibrium conditions. Equilibrium conditions होती हैं sum of horizontal forces 0 and sum of vertical forces 0. Horizontal forces का sum is equal to 0. Horizontal forces कौन सी हैं? F cos theta, डायरेक्शन राइटवर्ड, और these two forces, एक ये फोर्स है, दूसरा ये फोर्स है, ये अपोजिट डायरेक्शन है इनकी, इनका साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। तो सो एफ कॉस थीटा माइनस 7.5 कॉस 60 डिग्री माइनस 4.5 कॉस 20 डिग्री, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। नो सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस आल्सो 0। वर्टिकल फोर्सेस ये है अपवर्ड डायरेक्शन और इस कंपोनेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये नेगेटिव में आएगा। तो सो एफ साइन थीटा प्लस 4.5 साइन 20 डिग्री माइनस 7.5 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव में लेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड है, इसलिए ये नेगेटिव लिया है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग ए कैलकुलेटर। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट एफ cos थीटा कैलकुलेटिंग दिस टर्म वी गेट minus 3.75, calculating this term we get 4.23 is equal to 0. So further simplifying, f cos theta minus 7.98 is equal to 0. From here f cos theta is equal to 7.98. Let this is equation number 1 for reference. Now we will simplify this equation. We get f sin theta f sin theta is equal to, यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, f sin theta is equal to 6.495 minus 1.539. So we get f sin theta is equal to
4.956. Let this is equation 2. Now will consider simultaneously these two equations. We get the value of theta and f. डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशंस, ये देखें दोनों को डिवाइड करेंगे तो f sin थीटा ओवर f cos थीटा, तो f जो है f से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी कैन फाइंड थीटा. तो डिवाइडिंग both equations, equation number 2 divided by equation number 1, we get f sin theta over f cos theta is equal to 4.956 over 7.98. एफ से कैंसिल हो गया और tan थीटा sin थीटा और cos थीटा tan थीटा इज इक्वल टू tan theta is equal to 4.956 over 7.98. From here theta is equal to tan inverse 4.956 over 7.98. Finally we get theta is equal to 31.8 degree, correct to 1 decimal place. आंसर आपने देना है correct to 1 decimal place, 31.8 degree. Now putting this value of theta in any equation, equation number 1 में भी पुट कर सकते हैं और equation number 2 में भी पुट कर सकते हैं ये theta की वैल्यू, तो we will find f. So from here putting the value of theta in equation number 2, we get f is equal to 4.956 divided by sin theta. थीटा की वैल्यू है 31.8 डिग्री. We get f is equal to 9.39, correct to 3 significant figures. This is the answer. Now second part of this question is, it is given instead that the values of f and theta are 9.5 and 30. ये f की वैल्यू है 9.5 न्यूटन एंड थीटा जो है 30 डिग्री है, एंड द एक्सेलरेशन of the ring is 1.5 meter per second square. Find the mass of the ring. अब हम इस f की वैल्यू जो है 9.5 लेंगे और थीटा जो है 30 डिग्री, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे. एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजेंटली हो सकता है, इसकी मूवमेंट हॉरिजेंटल मूवमेंट को कंसीडर करेंगे क्योंकि ये रिंग जो है हॉरिजेंटली ही मूव कर सकता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव नहीं कर सकता. तो सो वी विल टेक ओनली द हॉरिजेंटल फोर्सेस का सम. हॉरिजेंटल फोर्सेस का सम ये है हमारे पास f cos थीटा माइनस 7.5 cos 60 माइनस 4.5 cos 20 डिग्री. बट अब हमने यहाँ पे क्या करना है, f जो है और थीटा जो है ये लेंगे, f की वैल्यू 9.5 और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, और हमने इसी इक्वेशन को लेना है जो इक्विलिब्रियम में. ये हम सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, जीरो. अब जीरो तो नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, इसकी मूवमेंट को शो कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन है रिंग में, तो ओनली वी विल टेक दिस इक्वेशन, बट एफ और थीटा की वैल्यू चेंज है. तो राइट साइड पे जीरो भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है रिंग का. तो सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट
horizontal movement of a ring, f की वैल्यू है 9.5, so we are taking 9.5 cos 30 डिग्री यहाँ से। देखिए हॉरिजॉन्टल इक्वेशन जो है, हॉरिजॉन्टल सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ये है, बट एफ और थीटा की वैल्यूज चेंज हैं। नाइन पॉइंट फाइव cos 30 माइनस 4.5 cos 20 डिग्री। आपने सिर्फ थीटा को, आपने जो है वो थीटा को लेना है 30 डिग्री, और 9.5 जो है ये एफ की वैल्यू है। एफ जो है, एफ इज इक्वल टू 9.5 न्यूटन एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 4.5 cos 20 डिग्री माइनस 7.5 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू एम ए। एम हमने फाइंड करना, और एक्सेलरेशन जो है वो गिवन है। एक्सेलरेशन इन दिस पार्ट गिवन, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 1.5, तो सो कैलकुलेटिंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ एम। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ एम, दैट इज 0.166 kg. This is the answer. Correct to three significant figures.